Hello everyone. So we were studying about racks, and I have already introduced you this topic, and that's an extension, or we are seeing this concept as an alternative to the fine tuning because there are certain complications in fine tuning. It's a lengthy process and computational complexity is there. So what you did in RAG, you are having database knowledge database, and you are fetching from that database a data, and that's what we call as a retrieval. And then we are generating the content based on that retrieval. Okay, so RAG is a AI framework for retrieving facts from external knowledge database to ground large language models on the most accurate, up-to-date information and to give the users insights into LLM's generative process. Up-to-date information. That's what we did tried yesterday also with the Chat GPT. We tried this thing. Okay, and it also gave us some information, and that information it presented us in a form of generative response which LLM do usually give. Okay, so LLMs, though we are already studying about this concept, advanced computer programs, large language models trained over a huge amount of data based upon deep learning techniques to understand the complex pattern relationship between the data. It can interpret natural languages, it can generate the answer in natural languages, it can perform variety of tasks like translation, creative content writing, composing videos, music, question answering, many things LLMs can do. Okay, one limitation is that they can generate outputs that are not always accurate or up to date. Not always accurate. Okay, uh, that's an issue because LLMs hallucinate. Okay, they also get confused what an answer could be for a particular query or a prompt. So that's one of the limitation. Also up to date, current. You want the result which is happening in current date. But as I told yesterday also, just like chat gpt cutoff date is 22, year 22, so it can't produce beyond that. However, we tried using web search, and it produced a result, it gave a result but not that much appropriate. Okay, so LLMs are trained on data that is has outdated, incomplete, and lack of knowledge. So we are creating here a database, knowledge database, and from that knowledge database we will be picking up the information, and LLM will represent it in a better way. Okay, fine. So RAGs, retrieval augmented generation, it integrates two key components: retrieval and generation. Retrieval involves accessing large database of existing knowledge or text corpus to retrieve relevant information. Okay. However, when we talk about the transformer architecture also,
Haven't we studied this concept, such kind of concept? Our LLM was also trained on huge amount of data, large database. Okay, that's what our LLM is trained. Model is trained over that. Okay, and we give query. Okay, prompt query. We do have key and value also. That's what we are calling as attention mechanism. And LLM gives us a result. But here it's not specifically, the concept is just like a SQL only. Query, key value. The concept is just like SQL only. But it's not referring to retrieval. Okay, there is generation. It's referring to generation, not retrieval. In LLM, the general working, how the LLMs work, it's generation, text generation. GPT is generation model, not retrieval and generation. Here we are having retrieval and generation. So definitely you will be available with a large database separate. That can be a text corpus or many things. From there you are going to retrieve, okay, a data. Generation involves creation of a new content on text based on the retrieval. So whatever you have retrieved from there, new content will be created. Okay. RAG models blend these two processes seamlessly, enabling AI system to generate content enriched by retrieved knowledge. Okay, just like I have a query. Did I meet my spending goal last month? Okay, this query will be given to the knowledge base. Knowledge base will retrieve the knowledge. Knowledge will be given to the LLM, and then the generation will be augmented generation. That means, yes, you stayed under budget by $50 last month. Good job. This is the answer. Okay, this is the answer. So it will retrieve the knowledge. Okay, here you can see the arrows. The arrows, the question is given to the LLM. This question is also forwarded to the knowledge base. So from knowledge base, I do have a relevant knowledge and I pick up the relevant knowledge from there. And then LLM accordingly created a new result for it. Not a simple result. Previously, what happens is you give this to the LLM only and you get the result. That is called as generation. Okay, that's a generation. Okay, that's a previous task. Query to LLM and result. Now you can see there is a change. Query is given to the knowledge base, then retrieval of the knowledge is been done. It is given to the LLM to have current context, current or better context. Okay, this will help LLM to make a better answer. That is RAGs. Okay, the architecture of RAG. Fine. So how does the RAG work? See the working. Here, in example, imagine you are asked to write an essay on climate change. Instead of starting from scratch, RAG model can retrieve relevant information from a vast database of scientific articles like news reports and etc. from research papers. Then it uses this information to produce a detailed, informative piece of content. This will save your time also, but also ensure that the information is accurate and up to date. Okay, if I give the same task to GPT to write
essay on climate change. GPT is trained on data till 22. It will also write an article on climate change, but not on current update. What happened? However, if we do work with the RAG, these systems, these are the knowledge base. Okay, knowledge base. They have a lot of things available in them. Okay, so your query will be given to the RAG. This knowledge, from there, it will retrieve the knowledge, and this retrieve will be given to the LLM, and LLM will produce the result. So I can have this diagram: query to the LLM, query to the knowledge base. It will pick up, and LLM will mix up whatever it created, it will mix up with the current data also, and now it's producing up to date result. That is what how the RAG works. Okay, there are many applications of RAGs, and right now you very well know the industry is demanding for RAG experts. Okay, so applications of RAGs are: it can assist content creators by providing relevant information, generating articles, blogs, product descriptions, and more. Educational assistance: it can aid students, educators in research projects. Obviously, customer support, chatbots, virtual assistant for providing accurate information. Knowledge discovery is the main goal of RAG. Okay, so here the researchers and the scientists can use RAG to explore a large amount of data. See, right now the issue with this is there's a lot of data available, lot of data, and our data science, machine learning, deep learning, generative AI, all these things came because of data only, because of this data which has been increasing rapidly since we are having too many activities happening. Okay, there are a lot of issues, lot of concerns, lot of development, so everything is converted to data. So let's use this thing for our purpose. Okay, got it. Ethical considerations are: okay, there is knowledge base, but the knowledge should be relevant, it should not be bias. That's always been a issue with LLMs. Okay, there should not be bias. Data should be fair. So RAG models trained on biased data will give you the biased results. Okay, it should be fair. Privacy and security concerns. Accessing large data for retrieval may raise privacy concerns. We have to safeguard the sensitive information also. Transparency and accountability should be there. Okay, from where you are getting the data? Can you provide the link also from where you are getting the data? So yesterday also, when we asked the chat GPT to access some information, current information, it gave the link from where it is getting the data. Okay, so there should be transparency from where you got this data. Kindly give us the link, support. Okay, future directions in the racks are: okay, continued research is going on to make this thing better. Expansion: RAG is expected to find applications in different other fields like multimedia content generation, data analysis, decision support systems. Okay, there are ethical guidelines and regulations. Okay, for AI, complete AI. Okay, there are ethics to be made. There are some certain rules and regulations are to be made over AI, how to use it properly. That are called as ethics. Okay, open source projects on RAG.
So LLM for information retrieval, Hugging Face Transformers, that means this is the project which is hosted by Hugging Face Transformer, provides a basic implementation of RAG using pre-trained LLMs like T5 or BART. You can check this thing. Okay, there are various open source projects are present for RAG. REAM, that is Reasoning Enhanced Attention for Language Models. This library is there which offers comprehensive RAG framework. You can check this also. It incorporates attention mechanisms to improve the focus on retrieved information during generation. So attention mechanism and the research is going on attentions. Different types of attentions are there. Transformers, architecture, differential transformer. There are many updates has been done in latest research, and they have also improved the architectures correspondingly. Okay, so it's going on. Nvidia Nemo guardrails, that means this project by NVIDIA focuses on building secure and responsible AI. So RAG component emphasize explainability and transparency. There is an issue right now. Ethics are concerned. Ethical rules and regulations are being listed for the AI, so that there should be clear understanding from where you are getting the data, from which source you are using, is it private or secure or not. So that's what been happening. All right. Therefore, okay, the LangChain. So LangChain, this library takes a modular approach to RAG, allowing user to build custom retrieval and generation pipeline. LangChain, a name itself suggests, you are going to make custom retrieval and generation pipeline. We'll be discussing about LangChain also. I will introduce this topic also. Okay, LangChain, Llama Index, building efficient and scalable retrieval systems, private GPTs. Okay, that means every organization is looking forward for their own GPTs, and they are trying to build the agents. APIs are created, fast API. Okay, so which can access the information. So right now that's been happening. Okay, that's been happening in the organizations. Like, um, okay, you are having large language model already in existence. Can you make an API, that is application programming interface, so that I can put a query on this API. This API can hit to LLM. It can get the answer from the LLM, and it can give me the result on my website. Okay, that's what the task. It's happening in the industry. Okay, so building APIs. We are also looking forward for private GPTs. Okay, that means it's transformer architecture only, but it's been trained for your private data. It's trained on your private data. Okay, so it's been doing the specific task for which it is being trained for. So companies, organizations they do have a lot of data, large amount of data they already have. Okay, so that's the reason they are building the private GPTs, AI agents. Okay, that's what Sam Altman also said. They are building the agents. Okay, and why RAG? What's the reason for RAG? Why industry also uses the RAG? See, again, they want to utilize the capability of LLM. Okay, but with current data, up to date data. So the point is better when you give a query, it should go to the knowledge base, and it should extract the knowledge from there, and this knowledge should be given to the LLM, so LLM can produce the better answer or the result.
That's the framework. Okay, so a lot of things are going on, research is going on in this direction. Okay, now above it's told they are incorporating better architectures, they are incorporating attention mechanisms, many things are going on. Okay, different components, layers, blocks are being added in the framework or the architecture to have the results, and this research will be continuing. Okay, so this is about your racks, and we do have LangChain also. Let me share the entire screen now. LangChain. Okay, so if I do talk about LangChain, again, it's a framework. RAG also a framework. In this framework, you can add the components. How you add a component? One component is your database. Another component is your LLM. Okay, and you have built this framework in such a way that you give a query, you get a response from this framework. Fine. So in the framework, you have to integrate the components. That's how it works. So LangChain is also a framework that helps someone to build AI application and simplify all the requirements without having to code all the little details. For example, interacting with an LLM. Once all the information is together in a nice neat prompt, you want to submit it to the LLM for completion. What you expect to build? Okay, I want to make a code, so I can ask to the LLM to build a code. You should prompt like that, give entire information, it will give you the answer. So LangChain provides a pre-built libraries for all the programmer that has to do provide their credentials and the prompt and wait for the response. Okay, it doesn't matter, it do have the endpoints and the protocols and authentication also, so it's all proper. Okay, it's not like that you're saying all the credentials, provide their credentials, programmer has to provide their credentials, then you will be in a trouble. No, there's a proper authentication and protocols and the rules. Okay, so LangChain, again, framework. What LangChain is doing to build AI applications. Okay, that means give some requirement, just like a prompt, and this framework will give you an answer that this is how you have to do the task. It will give you the reply, response. Okay, what are the key components of LangChain? So, when building AI applications, you need a way to communicate with the model. Okay, you might want to generate vector embeddings if your app is following a retrieval augmented generation pattern. So submit a prompt for the LLM to complete or open a chat session with the model. LangChain focus upon common interactions with the model, made it easy to create complete solution. Okay. So overall setup of LangChain is this only, that you have to interact with the model. And how better I can do interaction, what is the best way to interact with the model? This is what LangChain do. It provides an interface, it provides a medium between user and LLM to have an interaction. That's what it call as a framework. Okay, typically the application is going to do the same action again and again. The prompt used to communicate with the model
will have certain text that stays the same no matter what the real time data is. LangChain has special prompts. These prompts have pace holders. ओके, स्पेशल प्रॉम्प्ट्स हैं, पेस होल्डर्स हैं. पेस होल्डर क्या होता है? वो बीच में स्पेस रहती है ना, व्हाट यू कॉल्ड एज अ पेस होल्डर्स. ओके, इफ आई डू राइट समथिंग, माय नेम इज पेस होल्डर, आई एम योर AI पेस होल्डर. तो उसके पास ऐसे स्पेशल हैं पेस होल्डर्स लैंग चेन के अंदर. अभी तक आप समझे क्या? आप ये समझ रहे हो कि यार जैसे रैग है, रैग भी एक फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहा है. लैंग चेन इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क, इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क. क्या काम है? सर हमें AI एप्लीकेशन बिल्ड करना है. ठीक है, वी वांट टू डू दैट. कैसे करें सर? AI एप्लीकेशन बिल्ड करना है, यू वांट टू कम्युनिकेट विद द AI मॉडल. ठीक है, तो AI मॉडल LLM से आपको कम्युनिकेट करना है. तो लैंगचन कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सुविधा प्रोवाइड करवा दूंगा. आई कैन प्रोवाइड यू इंटरफेस, आप करो इंटरेक्ट, किसने मना करा? अच्छा, आप नाउ यू विल से सर हम तो करते ही थे इंटरेक्ट, प्रॉम्प्ट वॉम्प्ट देते तो हैं, वी गिव द प्रॉम्प्टिंग ना. प्रॉम्प्ट भी तो एक इंटरफेस करने का तरीका है. प्रॉम्प्ट करोगे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए ना भाई लोग. ओके, यू शुड बी नोइंग हाउ टू गिव अ प्रॉम्प्ट टू द LLM. तो इस पर बेस्ड वो प्रॉम्प्टिंग की तो अलग कहानी थी. ओके, प्रॉम्प्टिंग यू हैव टू लर्न. क्योंकि फंडा क्या है प्रॉम्प्टिंग का? गार्बेज इन और गार्बेज आउट. यदि आपने सही से प्रॉम्प्ट नहीं दिया तो तुम भी परेशान हो जाओगे, LLM भी परेशान हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा. तो प्रॉम्प्टिंग तो सीखने का. और प्रॉम्प्टिंग में आपने देखा जीरो शॉट, फ्यू वन शॉट, फ्यू शॉट, जहाँ एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हो उसे कि भाई ऐसा आंसर बना के दे दे मेरे को. फिर चेन ऑफ थॉट्स, कई टाइप की प्रॉम्प्टिंग होती है. अब आप तो खैर यूज़ कर ही रहे हो टूल को, तो मैं क्या बोलूँ, यू वेरी वेल नो अबाउट दैट. लैंगचन कह रहा भाई मैं इंटरफेस प्रोवाइड कर दूंगा, आपको AI एप्लीकेशन बिल्ड करना है, ठीक है मैं आपको सपोर्ट देता हूँ. मेरे पास क्या है ना, प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट है, बस स्पेस होल्डर है, उनकी जगह अपन को फिलअप करना है. तुमको इतना कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर. आई विल प्रोवाइड यू द एंटायर हेल्प, मैं कर दूंगा आपकी. ठीक है. सो that means that prompts can have placeholders for areas that will be filled in the right before submitting to the LLM. बस उसको भर दो, fill in the blanks कर दो और LLM को वो दे दो, सबमिट कर दो. Instead of doing a very inefficient string replacement on the prompt, you can provide LangChain with a map of each placeholder and its value. It will take care. वो बाद में वो कैसे prompt को complete करना है वो सब हो जाएगा, कोई इशू. तुम्हें कोई लंबा चौड़ा prompt नहीं बनाना, ये कुछ नहीं करना, उसके पास है LangChain के पास. Okay, once the model has done its job, respond with the completion, there is a good chance that application is going to need to do some post processing before continuing. There might be some simple cleanup of characters. The completion needs to be included in a parameter of a class object. LangChain output parser make quick work by its offering deep integration between how LLM will respond, application custom classes. सीधी सी बात है, आपने लैंगचेन की हेल्प से LLM को क्वेरी करा. ठीक है, अब LLM तो भाई सीखा सिखाया है, वो रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है, इट विल रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्ड में भी लैंगचेन फिर आ गया सामने. क्या कह रहा है वो? लैंगचेन आउटपुट पार्सर मेक क्विक वर्क बाय ऑफरिंग अ डीप इंटीग्रेशन बिटवीन हाउ LLM विल रिस्पॉन्ड, LLM कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, एंड एप्लीकेशंस कस्टम क्लासेस. यानी कहीं कोई जो रिस्पॉन्स में जैसे रैग में पढ़ा था ना बेटर होना चाहिए,
उसी तरीके से लैंग चेन भी आपको मदद कर रहा है कि रिस्पॉन्स हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। इट डू हैव द कैपेबिलिटीज फॉर इट। डेटा रिट्रीवल बता चुका हूं। रैग के बारे में आपको पता है। तो LangChain जो है offers few libraries to add implementing RAG pattern in the application. To gain the right context, data might need to come from different sources. Each source likely follows a different schema. समझना बात को। पढ़ना अलग बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल टफ है। You are having many sources S1, S2, S3, S4। आपका जो नॉलेज बेस में से फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस you have to collect the data, and then you have to give data। आपने अलग अलग सोर्सेस से, अब ये सोर्सेस में अलग अलग स्कीमा को फॉलो कर रहे होंगे। ये स्कीमा यानी हाउ डेटा इज केप्ट इन डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, कैसा है डेटा, ये तो स्कीमा है। अब बहुत सारी बातें आती है, अब जब क्योंकि ये डेटाबेस से जुड़ गया है पूरा हिसाब। डेटाबेस, अरे भाई मेरे को तो जब मैं अपना पढ़ता था, इंजीनियरिंग करता था, ये डीबीएमएस जो सब्जेक्ट था ना, ये मैं थोड़ा सा क्या है ऐसे, तो वैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के काफ़ी सब्जेक्टों से तो दूर ही रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सच की सच बात है। मेरे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता था, द सब्जेक्ट विच आई डू लाइक इस एल्गोरिथम्स, मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम, बस। बाकी आप मुझसे बोलो ये डीबीएमएस और दूसरे और कई सब्जेक्ट्स हैं, वो मेरे को इतने, ठीक है, परेशान ही करा इन्होंने। ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब तो डेटाबेस जो है, स्कीमा बोला इन्होंने, दैट मीन्स हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी। स्कीमा क्या, वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, और फिर लेवल भी होते हैं कहीं, इसमें आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, दैट मीन्स आप 1 लेवल या 2 लेवल, कुछ इस तरीके से होता है। स्कीमा डिफाइन किया जाता है। ओके, स्कीमा डिफाइन किया जाता है, ये आपका डेटाबेस है। तो आप जब क्वेरी करते हो डेटाबेस को, तो स्कीमा डिफाइन होता है कुछ। तो वो कह रहा है डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीमा फॉलो कर रहा है, और फिर आप डेटा रिट्रीव करके उसको यू हैव टू गिव टू द एलएलएम। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। एलएलएम को देना है, और एलएलएम से फिर आपको, अच्छा एलएलएम को भी बड़ा, अच्छा व्हाट द लैंगचेन इज सेइंग, लैंगचेन कह रहा है कि ओके, डेटा जो है आपको क्वेरी, क्वेरी वाली बात भी हुई ना। क्वेरी मैं आपको करवा दूंगा, आपको एआई एप्लीकेशन बनाना है तो क्वेरी मैं आपको करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। पेस होल्डर्स है मेरे पास, बाकी बनी बनाई क्वेरी, चिंता मत करो। सो यू कैन गिव दिस क्वेरी टू द एलएलएम, लेकिन चलो पहले ये नॉलेज बेस को चली जाए। ठीक है, नॉलेज बेस को चली जाए, तो वो डिफरेंट सोर्सेज से क्या करेगा, डेटा उठाएगा, उठा के फिर एलएलएम को दे देगा, एंड एलएलएम फिर क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा। ओके, इट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट। अब यहाँ पर वो लैंगचन कह रहा है कि आई विल असिस्ट रैग पैटर्न, आई कैन इम्प्लीमेंट द रैग पैटर्न। Okay, first to gain the right context, data might be come from different sources, different schema is there. LangChain offers the document as a way to normalize data coming from multiple sources। उनको normalize करेगा, ये document doc object करके होगा, ये HTML वगैरह के अंदर होता है ये doc object वगैरह, वहीं देखा, ये सुना है यहाँ पर। So as a document data can easily be passed from different chains in a very structured way। तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट करके वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो द स्टोर दैट इज यूज टू लुक अप द अपडेटेड डेटा, दैट इज नॉट योर टिपिकल रिलेशनल डेटाबेस। मैंने कहा आपसे डेटाबेस में भी कई चीजें हैं,
ये रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहा है। हो सकता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर यू आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। Okay, so it's a special version of database that offers to store and retrieve vector, हाँ vector database. So more अभी इसी हमने रैग और लैंगचेन में वेक्टर डेटाबेसेस की बात करी ना, रिट्रीव वेक्टर। ओके, सो databases like data stacks Astra DB offer a vector option। तो भाई अब स्थिति क्या बन गई है, वेक्टर। ओके, वेक्टर डेटाबेस यही बोला था आप लोगों में से किसी ने कि सर वेक्टर डेटाबेस होते हैं। वेक्टर डेटाबेस सीधी बात है, यू आर हैविंग अ वर्ड, उसकी एम्बेडिंग होगी, यही तो वेक्टर है। वी डू हैव एम्बेडिंग्स। तो एम्बेडिंग्स क्या होती है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वर्ड का। तो आपके डेटाबेस में एम्बेडिंग्स हैं, और एम्बेडिंग हमने बना रखी है, कहीं कोई ज़रूरत थोड़ी ना, हमने तो बना रखी है, डेटाबेस तैयार है आपके लिए, चिंता मत करो। वी डू हैव ग्लोब एम्बेडिंग्स। हमारे पास वर्ड टू वेक नाम का प्री ट्रेन मॉडल भी है, सब है हमारे पास। ठीक है, तो एम्बेडिंग्स है हमारे पास वर्ड की। आप बोलो क्या करना है, यूज करना है इन्हें। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ स्टोरिंग वेक्टर एम्बेडिंग्स, लैंगचेन ऑफर्स इंटीग्रेशन। अब यही तो कर रहे हैं एआई एजेंट्स पर, वो जो बात कर रहे हैं ना, और ये इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, यही चल रहा है। आपका जो वेक्टर डेटाबेस है ना, वहां से मेरे को डेटा खींचना है, फेच करना है, लगाओ लैंगचेन। तो लैंगचेन यही तो था, चेन है ना वो। लैंग यानी लैंग्वेज, चेन यानी यू हैव टू मेक अ लिंक। ओके, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट किससे, एलएलएम से। क्यों, अच्छा आंसर बना के दे दे भाई मेरे को। अब देखो ये जो कहानी लिखेगा ना, अब देखो यहां पर, इट टेक्स थिंग्स क्वाइट बिट फर्दर फॉर ऑफरिंग सम कन्वीनियंट फीचर्स टू वेक्टर सर्च, इंक्लूडिंग सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी सर्च बाय वेक्टर। तो सिमिलैरिटी सर्च तो वही आ गई ना, टेंशन मैकेनिज्म। वेक्टर, जहां वेक्टर हो गया, जहां एम्बेडिंग हो गया, जहां वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट से सिमिलैरिटी निकल जाएगी। ओके, वी कैन ट्यून योर वेक्टर सर्च विद मैक्सिमम मार्जिनल रेलेवेंस सर्च, कर सकते हैं हम। तो वही वही क्या है, ये आप ऐसा फ्रेमवर्क बना रहे हो, ये रहा आपका वेक्टर डेटाबेस। अब आप चाहे लैंगचेन ले लो, चाहे तुम रैग ले लो। लैंगचेन की अभी बात कर रहा हूं, तो बोला लैंग प्लस चेन। लैंग और लैंग्वेज ही होगा, और क्या हो सकता है। चेन यानी भाई आई नीड टू कनेक्ट, नीड टू क्रिएट अ चेन। चेनिंग कहाँ कर रहा हूँ मैं, बोल रहा है यार तुमको डेटाबेस से नॉलेज खींचनी है। ठीक है भाई, लगाते हैं। तो आई विल बी हैविंग अ क्वेरी, तो क्वेरी में भी लैंग चेन बोल रहा है कि तुम चिंता मत करना, मैं बना बनू के दे दूंगा, सिर्फ पेज होल्डर है, उसकी जगह अपन तुमको क्या चाहिए वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये क्वेरी जाएगी यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस में, वेक्टर डेटाबेस से हम आंसर ले आएंगे। ठीक है, विल गिव इट टू द एलएलएम, और एलएलएम से भी रिफाइंड आंसर लेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, इससे भी रिफाइंड आंसर लेंगे। दैट्स व्हाट हैपनिंग इन लैंग चेन। ओके, सो चैट, दीज डेज चैटबोट्स आर बन ही रहे हैं वो तो। यदि आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे एआई एप्लीकेशन को, तो वो भी आपको करेगा हाय। अब यहाँ एक चीज पे फोकस करना है आपको, कन्वर्जेशन पे। ओके, आप लैंगचेन में ना कन्वर्जेशन देखोगे, यू विल बी हैविंग कन्वर्जेशन दैट इंक्लूड्स क्वेरी एंड रिस्पॉन्स। ये दो टर्म आपको देखने को मिलेगी लैंगचेन में, क्वेरी एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, कन्वर्जेशन स्टार्ट होगा, क्वेरी करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा। ओके, वो बोला ना चैटबॉट के पर्सपेक्टिव में ही बात कर रहा है वो, लैंगचेन की एज एन एप्लीकेशन। ओके, व्हेन एन एप्लीकेशन इज चैटिंग विद द एलएलएम, it needs to give LLM some historical information context about what is being asked. If no context is given in the conversation, it's quite dry.
प्रोडक्टिव आंसर नहीं मिलने वाला। ओके, प्रोडक्टिव आंसर नहीं मिलेगा, तो कुछ आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तो प्रॉम्प्टिंग में करते ही थे। कंटेक्स्ट देना, एक एग्जाम्पल देना, ताकि वो समझ सके कि क्या आंसर चाहिए। सो LangChain ऑफर्स अ स्पेशल मेमोरी दैट कैन सेव चैट हिस्ट्री। वो कर सकता है डेटा स्टोर्ड स्पेसिफिक वे। इट्स अ टाइप ऑफ अ स्टोरेज दैट कैन परफॉर्म क्विक लुकअप्स, वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उसने प्रोवाइड कर दिया। अभी काम कैसे करता है LangChain, चलो देखो। When you pay with the credit card for something, certain steps need to happen in a specific order. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे होती है, चैनल होता है ना, वो पूरा पूरा फ्रेमवर्क है। चलो, when the card information needs to be gathered and secured, भैया पहले तो इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उसी के बाद ही तो आप पेमेंट कर पाओगे। ये जो भी कुछ होगा ये अथेंटिक होगा, है ना, प्रीवियस ईयर सिक्योरिटी के साथ। देन इट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड टू द प्रोसेसर। पहले तो आपका अथेंटिकेशन होगा कि तुम जो डिटेल दे रहे हो वो सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अथेंटिकेट। फिर उसके बाद दैट इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसमिटेड टू द प्रोसेसर, सर्वर पे जाएगी। द सर्वर मेक्स श्योर कार्ड की डिटेल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा भी है इसके पास, कोई इशू नहीं है, तुम आगे बढ़ा दो, तुम ट्रांसफर कर दो, तो उसके अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, सीधी सी बात है, एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, कंफर्मेशन आ जाएगा आपके पास, रिसिप्ट आ जाएगी। ईच ऑफ दो सिस्टम मस्ट बी फॉलोड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यू कांट विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम एन अकाउंट विदाउट नो मनी इन इट। पैसा नहीं होगा तो निकालोगे कहां से। तो यहां पर भी यही काम आ रहा है। द चेन इन द लैंग चेन ब्रिंग्स एन आइडिया पुटिंग एआई एक्शंस टुगेदर इन ऑर्डर। ओके, तो ये यही जो आपने देखा ना, इसके सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक्शंस होंगे टू क्रिएट प्रोसेसिंग पाइपलाइन। ईच एक्शन और चेन इज नीडेड इन अ पाइपलाइन टू कंप्लीट द ओवरऑल गोल। थिंकिंग अबाउट द रैक्स, रैक के बारे में पता है हमें, अभी पढ़ भी रखा था। इट स्टार्ट्स विद द यूजर सबमिटिंग अ क्वेश्चन एंड एम्बेडिंग इज क्रिएटेड। वो तो पता ही है, एम्बेडिंग बनती है, फिर वो लुकअप करते हैं डेटाबेस से, और वहां से क्वेश्चन और प्रॉम्प्ट वो रिस्पॉन्स आता है। All the steps in the rack pattern need to happen in a succession. If there are any errors, the processing should stop. LangChain offers the chain construct to attach steps together in a specific way with a specific configuration. All LangChain libraries follow the chain construct to make it easily move steps around, create powerful processing pipeline. यहाँ आपको कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, उसकी चेन बनेगी। ठीक है, स्टेप्स होंगे इंस्ट्रक्शंस के, एक के बाद एक वो सॉल्व होंगे। यदि कहीं पर आपका काम बैठ जाता है, नहीं होता है, तो आप जैसे वो कह रहे हैं ना, इफ देर इज नो मनी, तो आप ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो लैंगचेन में भी वो चेन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाता है, चेन। ठीक है, पाइपलाइनिंग करता है पूरी, पाइपलाइन दैट मीन्स पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यदि कहीं पर भी स्टक होते हैं तो रिटर्न कर देगा वो वापस। मेमोरी भी है उसमें कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, तो उसके हिसाब से आपको जवाब मिल जाएगा, यू विल गेट द रिस्पॉन्स। ये लैंगचेन का काम है। ओके, सो आई नीड टू कम्युनिकेट विद LLMs, आई नीड टू build AI applications, or I need to perform some task. So the task will be based upon chain of thoughts, like chain of instructions, chain of steps. What needs to be followed to get an result or output. तो ये लैंग चेन ये काम करता है। ओके, रैग उसका एक एप्लीकेशन ही है। लैंगचेन का रैग, लैंगचेन ऑफर्स डिफरेंट सिनेरियोज टू इम्प्लीमेंट रैग पैटर्न। सो हम रैग को भी लैंगचेन के अंदर देख सकते हैं। चैटबोर्ड भी उसी का ही काम है। सिंथेटिक डेटा जनरेशन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंगचेन। इंटरेक्शन विद द डेटाबेस यूजिंग natural language, that is also a part of a LangChain.
डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, वेक्टर डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, ये भी उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका लैंग चेन है, ये डायग्राम है। ओके, सो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ ले लिए। ओके, इट कैन डिवाइड दिस पीडीएफ और डेटा इनटू चंक्स, टोकन कर देगा, उनकी एम्बेडिंग कर देगा। ये रहा वेक्टर डेटाबेस, ये वेक्टर डेटाबेस को दिया। उसके बाद सर्च होगा, सिमेंटिक सर्च। ठीक है, ये वो आ रहा है वहां से, पहले तो रैंकिंग होगी। ठीक है, वेक्टर डेटाबेस से रैंकिंग होगी, रिजल्ट्स की रैंकिंग होगी। एलएलएम को दिया जाएगा, एलएलएम एक आंसर जनरेट करेगा। जो भी एलएलएम आंसर जनरेट करेगा, दैट विल बी गिवन व्हाट इज द न्यूरल नेटवर्क। ये ना ह्यूमन है, व्हाट इज द न्यूरल नेटवर्क, इसने क्वेश्चन करा, उसकी एम्बेडिंग हुई, सिमेंटिक सर्च हुआ, और फिर ये वेक्टर डेटाबेस के पास गया। इस तरीके से ये वाला डायग्राम अपन ने रैग में ही देखा है। अब क्या है, क्या ये सीधी सी बात है, यू आर हैविंग अ वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, वी डी बी। ठीक है, आपके पास वेक्टर डेटाबेस है, आपका, आप जो हो, यूजर हो, ये रहे, आपने क्वेरी करी, क्वेरी गई, क्वेरी की एम्बेडिंग हुई, है ना, टेक्स्ट हुआ, टोकन हुआ, एम्बेडिंग हुई, एम्बेडिंग सर्च पे गई जवाब निकालने के लिए। और वो कहाँ सर्च करेगा, डेटाबेस में। डेटाबेस में ये सब कुछ है, डेटाबेस में इतना पूरा सब रख रखा है अपन ने। वेक्टर डेटाबेस है, यानी जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, सब मैंने व्हाट आई पुट इन द वेक्टर डेटाबेस, सबको एम्बेडिंग करके रखा है मैंने, है ना। तो आपकी जो ये एम्बेडिंग है, ये सर्च पे गई, इसने वेक्टर डेटाबेस से सर्च करा, जो भी इसको मिला उसकी रैंकिंग हुई, रैंक होने के बाद एलएलएम को गया, एलएलएम ने भैया अपना अपनी अपनी टेक्निक लगाई, उसने आंसर जनरेट करके तुमको टिका दिया, लो। ये रैग में करते थे, ये लैंगचेन, रैग ही लैंगचेन का एक एप्लीकेशन है। बता तो चुका हूं, अब ये वापस आ गया, ये तो समझाया था कुछ देर पहले। बस लैंगचेन में वो कह रहा है कि आपको हम कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, और ये जो स्टेप्स, अभी तो इट्स जनरल डायग्राम, बट इंस्ट्रक्शंस और सब प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वो इंटरनल है। ये LangChain का इंट्रोडक्शन। Okay, so I have introduced LangChain, I have introduced racks, fine tuning, architecture of LLMs, सब बता दिया मैंने आपको। जितना मुझे लग रहा था बताना चाहिए था, वो मैं अपने लेवल पर कंप्लीट कर पाया हूँ। ठीक है, एंड यहीं पर ही अभी फिलहाल इस कोर्स की एंडिंग है। ओके, फाइन, let me stop presenting, let me